Now, the second method is, now we will not use the formula here. So that is for less than OZ. So it's very much clear that whenever you are going to find out the medians of the group data, either those group data are the exclusive class interval or the inclusive. So for inclusive, certain changes you have to do here, but still, because we have the exclusive class interval, so now first the same procedures for median, we have to go for the what? Commutative frequency. And now the second method is for less than OZ. Means graphical method, you can see that. Less than OZ. So now the same procedure for finding the commutative frequency, like a first method. So now the CF, the first number you will write in the same manner. Then alternatively you will add this 4 plus 8 is now 12. Now 12 plus 12 is up to 24. And 24 plus 6 is now 30. And 30 plus 6 is 36. ये देखिए, ये बिल्कुल वही है, ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. इज इट क्लियर? ये बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीजर आपने करना है. लेकिन अब आपका बिकॉज लेस देन ओजिब है, तो ना एक कॉलम आपका द सेपरेट कॉलम, द फोर्थ वन कॉलम आई एम आल्सो मेकिंग द पॉइंट्स. सो व्हेनेवर यू आर ड्राइंग द ग्राफ इन योर ग्राफ पेपर, so now the accuracy will come here and your concentration will be more on only this one column. So now, so in less than OZ, upper limit with cumulative frequency are taken. ये देखिए, लेस देन OZ में जो आपने द फोर्थ कॉलम यहाँ में, इसमें आपका अपर लिमिट आप बनाएंगे. अपर लिमिट कीप इन माइंड, लेस देन OZ में अपर लिमिट. सो नाउ देखिएगा सी, दिस इज 60,4. देखिए, इज इट क्लियर? अपर लिमिट 70,12. दिस वन, देन 80,24, देन 90,30. and then 100,36. So all the numbers which you are looking either in CF or FI or here, so now they all are just in a table of 36. Is it clear? So nowadays the graph paper, the long graph paper, the full graph paper are available in the market, so there is no problem at all. So now wait, I'm just looking the stick. जरा नई कोचिंग है तो शिफ्ट किया है, तो थोड़ा सा अभी मैथमेटिक्स का टीचर तो हर जगह टूल मिल ही जाता है. Now this is your x-axis, जिसको आपका horizontal axis भी you can say that. This is your vertical axis, y-axis. This is your vertical axis. Is it clear? They both are intersecting to each other at 90 degree, and the coordinate of DR is 0, 0, and is denoted by O. O means origin point. Origin point. So now the very appropriate scaling you have to do here. So now this is, now see 10, 20, 30, 40 are missing, no problem. So now see, so we are starting with 50. Basically to make a graph, it is just a combination of your fingers and the eyes. So now see, this is 70, it's 80, it's 90, and it's
Fine. Is it clear? So, see, these are the class interval or marks obtained. Marks obtained. It will be आपका always आपका shown on the x-axis and the points. Points means आपका नाम CF. Actually this is the CF, but we are this. So now these all are in a multiple table of 4. So 2 का गैप लेकर के देखो ना. This is 4, 8. देखो this is 4, 8, 12, 16, 20. This is 24. Now this is 28. This is 32 and 36. These all are your what? These are your CF. Cumulative frequency will always shown on the vertical column. So now see, it is basically from here it is the continuous, but before that it's missing 10, 20, 30, 40. So now just you will rub it, delete it, and you will make this up another curve, which is known your kink. Clear है? तो प्रॉपर स्केलिंग शुड बी दियर. अब आपका देखिए ना, बिकॉज द लोअर लिमिट इज योर 650, सो यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम हियर, बट सी नाउ द पॉइंट 64. ना देखते 60 पे. सो नाउ दिस, अब आपके पास ग्राफ पेपर होता है तो आप बिल्कुल इसको बना सकते थे. दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस इज 60,4. Then 70,12. So now this point is your 70,12. Now the third one is 80,24. 80,24. I have kept अभी शिफ्ट किया तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ. 80 पे आपका देखो 24 है. सो नाउ खाली रफली आपका नाम आई एम मेकिंग आपका नाम, लेकिन ये एग्जैक्ट आएगा आपका देखो नाम. थोड़ा भी अगर गलती होगी तो ये आपका बता देगा. तो नाउ दिस पॉइंट इज व्हाट? दिस इज योर 80,24. सो नाउ दिस इज 90,30. तो 30 इज कमिंग हियर. ये देखिए 30. So this point is 90,30. And the last one is आपका नाम देखो. This sorry, it was 100. So now 100. It was 36. So now so this one point is 100,36.
So now when you are making a drawing the less than algebraic graph, so now the upper limit with cumulative frequency you have to take. So now after just locating these points on the graph paper or assigning on that, so now देखो ये now this 15 आप क्या करेंगे, ऊपर को जाते हैं लेस देन ओजी में आपका क्या है देखो, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाते हैं आपका, देखो सारी चीजें समझ लीजिएगा। एंड फ्रॉम फ्री हैंड आपको ये देखिए, ये फ्री हैंड यू हैव टू ज्वाइन दीज ऑल पॉइंट्स, ये देखिए आपका नाम दिस। After joining these all points, now it will work. Now you can see. So now n is this n by 2 18. Now this 18, which is where it's coming in vertical column CF, ये देखिए vertical column CF, so mark it there, इसको मार्क करिएगा, देखिए ना this, तो this is your 18, ये देखिए n by 2 निकालने के बाद n is आपका point A and you name it point A। From this point, अब इस point से what you have to do? Now देखो this, draw a parallel line, draw a line parallel to x-axis. X-axis is what? Horizontal axis. See. So now from this 18, now see देखिए, जरा मैं ये देखिए, and intersecting the free hand graph at point B. So this one is C, this is your point B, free hand graph को यहाँ पे intersect कर रहा है। From this point, draw a line parallel to y-axis. Y-axis, y-axis means vertical axis पे आप क्या करें? What you have to do? Now ये देखिए, अब आप यहां से इसको ड्रॉ कर दीजिएगा नीचे। तो नाउ देखते हैं, नाउ एक्स आइदर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और meeting x axis at, देखिएगा ये लगभग आपका देखो 76 है। अब आपने फर्स्ट मेथड में देखिए, अगर आपको याद होगा, देखिए क्या था, मीडियन प्लस 70 प्लस देखिए 12, नहीं दैट वाज 18 माइनस 12 अपॉन ये 12 और इनटू हाइट कितनी थी, दैट वाज आपका ना 10, आपका तो 6 to the 5, तो ये 75 करीब आ रहा था। देखिए तो नाउ यहाँ पे आपका बिल्कुल अप्रोक्सीमेट, ये यहाँ पे सॉरी ये देखिए आपका नाम, तो ये आपका नाम एक्स एक्सिस एट 75 पे ये कट कर रहा है। तो नाउ तो देयरफॉर median is 75।
तो विदाउट आपका नाउ the formula you can also find out the median. So this was by the help of the less than OZIP, and less than OZIP, after finding the cumulative frequency, one more points table you have to make, vertical column. In that you have to take the upper limits with CF. Clear है? Fine है? It was the second method. Please